हेलो एवरीवन वी टॉक अबाउट कि एग्रीकल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इन फूड सिक्योरिटी या न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं बट गिवन द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द share of greenhouse gases emissions from agriculture sector, it is equally important that we are moving towards sustainable agricultural practices. And because of the greenhouse gases emissions or the traditional agriculture practices not being sustainable, उसका सिर्फ environmental cost नहीं but health related and social cost भी exist करता है, because that is directly impacting the soil fertility and the productivity, agriculture productivity, which is already very low in India. So soil organic carbon content has depleted. उसका जो stable threshold है that should be 1.5%. It used to be 2.4% in 1947, but today it stands at 0.4% only. इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और डिक्लाइन होती है, इसकी वजह से फार्मर्स आर यूजिंग मोर ऑफ फर्टिलाइजर्स सब्सिडीज, उसकी वजह से जो गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो और इंक्रीज होता है. सो एक्सेसिव यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर इज हैपनिंग. सो द रिस्पॉन्स रेशियो ऑफ फर्टिलाइजर्स भी उसकी वजह से कम हो रहा है. जैसे अगर हम यहाँ पे फिगर देखते हैं कि अर्लियर इट यूज टू बी कि 12 kg ऑफ ग्रेन यूज टू बी द हार्वेस्ट व्हेन 1 kg ऑफ एनपीके फर्टिलाइजर वाज यूज 1960s के टाइम पीरियड में. नाउ इट हैज डिक्लाइन टू, वी कैन से, लेस देन हाफ. 5 kg ग्रेन प्रोड्यूस होता है व्हेन यू आर यूजिंग 1 kg ऑफ एनपीके फर्टिलाइजर. तो रिस्पॉन्स रेशियो ऑफ फर्टिलाइजर डिक्लाइन हुआ है. And it is expected, as per the data analytics and forecasting, कि by early 2035, India may face food shortage. So what are the solutions? Natural farming mission है. Under natural farming, we can focus upon the regenerative farming. Regenerative farming, which is based on the principle of agroecology, agroforestry की हम बात करते हैं. Profit and productivity should be the focus. So social capital is linked to the growth of rural sector, and definitely the agriculture sector is a core component of it. Knowledge intensive system should be integrated with the scientific agricultural practices. India में 15 agroclimatic zones हैं, तो research and development should be aligned on similar lines. Region specific research and development promote होनी चाहिए, so that we can achieve our target of net zero by 2070. And on similar lines also, like, there's an important model emerging from West Bengal, which is based on organic farming, using of indigenous seeds, using natural farming, which is the Jhargram model of West Bengal, where women participation of NGOs and participation of private sector is ensuring that sustainable agricultural income is being generated, which is not just having economic benefits but also social benefit in terms of empowerment of women farmers.